सुबह की नौजवानों की गुरु की क्लास और इस क्लास का टॉपिक जो दिया गया है वो वक्त की शिनाख्त, अवेयरनेस ऑफ टाइम। जिंदगी लाइफ इज इक्वल टू टाइम। जिसको अल्लाह ने टाइम दिया है उसने लाइफ दिया है। जिसके पास टाइम खत्म हो जाता है लाइफ भी खत्म हो जाता है। तो आपकी लाइफ की जो वैल्यू है वो टाइम की वजह से। जिसने टाइम को गंवा दिया उसने जिंदगी को, टाइम को बर्बाद करने वाला जिंदगी को बर्बाद कर देता है। कोई कीमत नहीं है जिंदगी की, किसी की कीमत नहीं है, वक्त की कीमत नहीं है। इसीलिए खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में कसम खाई है। इंसान जब कसम खाता है ना तो मामूली चीजों का इंसान के नजदीक जो चीजें होती हैं, रेस्पेक्टेड थिंग्स होते हैं, उसकी कसम खाई जाती है। और अल्लाह तबारक व तआला का कसम खा रहा है उसके नजदीक कितना रेस्पेक्टेड टाइम है। परवरदिगार टाइम की कसम खा रहा है, ज़माने की कसम, टाइम की कसम। इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान घाटे में है। इंसान किसमें है? घाटे में, नुकसान में। मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर कोई ऐसा इंसान है कि जो सुबह से घर से निकले और 100 रुपये घर से लेकर निकले और वापिस आए रात को 100 रुपये लेकर, वो नुकसान में है या फायदे में है? हाँ, नुकसान में। क्यों? इसलिए कि 100 लेकर गया और 100 रुपये वापिस लाया, दिन के 12 घंटे उसके बेकार हो गए। 100 का 100 लाने वाला भी नुकसान में है। अगर 100 लेकर गया और वापिस जो है वो 80 लाया, 100 का 100 लाने वाला भी नुकसान है, 100 का 80 लाने वाला भी नुकसान है। 100 सुबह में लेकर गया बिजनेस के लिए और शाम में आया 0, तो ये क्या है? ये भी नुकसान है। इस नुकसान को कहते हैं खुसरान, यानी जो था पूरी तरह से उसका क्या हो गया? खत्म हो गया, वो मिलियनेयर हो गया। मिसाल, कोई इंसान बर्फ खरीद कर लाए आइस बेचने के लिए और ले जाकर तो दूर में
बिलहक है। जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो रास्ता राइट पाथ होना, सही रास्ता होना, राइट पाथ। अगर रास्ता सही नहीं आपने आपको जाना है बेंगलोर, जा रहे हैं किधर तरफ, आंध्रा की तरफ, तो आप जितना स्पीड जाएंगे अपने मकसद से नजदीक होंगे या दूर होंगे। फ्रॉम अलीपुर टू बेंगलोर 70 किलोमीटर है और आप गाड़ी में जा रहे हैं किधर, हिंदूपुर की तरफ, तो आप जितना तेजी से जा रहे हैं उतना ही आप बेंगलोर से नजदीक होंगे या दूर होंगे। जन्नत का रास्ता है, बस करें इहदिना सिरातल मुस्तकीम, और हमने अपनाया है शैतानी रास्ता। जन्नत का रास्ता है नमाज में, जन्नत का रास्ता है रोजे में, जन्नत का रास्ता है सच्चाई में, जन्नत का रास्ता है रहम करम में, जन्नत का रास्ता है सुलह सफा में, जन्नत का रास्ता है इसार कुर्बानी में, जन्नत का रास्ता है मेहनत में, जन्नत का रास्ता है सिले रहने में, जन्नत का रास्ता है दोस्ती में, जन्नत का रास्ता है माफ कर देने में, जन्नत का रास्ता है मेहनत करने में। और हम को क्या कर रहे हैं, झूठ है, गीबत है, हसद है, दुश्मनी है, लड़ाई और झगड़ा है, तो हम जन्नत से नजदीक हो रहे हैं, जन्नत से दूर हो रहे हैं। राइट पाथ, ईमान, फेथ, देन स्ट्रगल, और जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो सही करना है, उल्टी रास्ते की तरफ नहीं जाना इंसान को। और चौथे क्या है, वतवासौ बिस्सब्र, यानी रेजिस्टेंस। जब आप जा रहे हैं ना, उस रास्ते में क्या है, अप एंड डाउन से, उस रास्ते में स्कॉट है, उस रास्ते में कांटे हैं, मुश्किलात हैं। इन मुश्किलात को आप लोग क्या करना है, रेजिस्ट करना। इस्तेमाल इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, रेजिस्टेंस नहीं करेंगे। हिम्मत बुलंद की हिम्मत बुलंद, मादाम ने रोज़गार में जारी रसीदा, गांधी बना तो ऐसे ही नहीं बना, मुश्किलात को उसने सहा। खुमैनी बना तो ऐसे ही नहीं बना, उन्होंने उसके रास्ते में मुश्किलात को सहे, इस्तिक़ामत किया। आज दुनिया में जितने
ज़रूरत में खर्च करते हैं, स्काफ चाहिए, मानकी चाहिए, चादर चाहिए, बच्चे की फीस भरना है ना। अक्लमंद इंसान जो है, जो एटीएम में पैसा होता है, वो ऐसे ही बर्बाद। खुदा ने तुम्हारे एटीएम में कितना पैसा डाल रहा है मालूम आपको? रोजाना कितने सेकंड से कितने घंटे रोजाना, जल्दी बोलिए, 24 घंटे। हर घंटे के कितने मिनट, हर मिनट के कितने सेकंड, 60। टोटल एवरी डे यू आर अर्निंग हाउ मेनी सेकंड्स? 86,400 डॉलर तुम्हारे अकाउंट में डालते हैं। अगर 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा आपने ऐसे ही सर्व कर दिया गपशप में, मौज मस्ती में, बातों में, लड़ाई झगड़े में, तो गोया आपने उतने डॉलर आपसे क्या करिए, गंवा दिए। इसीलिए कहते हैं समझ लो, समझ लो, समझ लो, इसे गया तो फिर आप बोलिए। अब 44 साल जो 60 साल के हो गए थे, अभी दोबारा 72 साल, माशाल्लाह, ये दोबारा जवान बनना चाहिए, बोल सकते हैं? पूरी कायनात के खजाने उठा दे, फिर ये दोबारा जवान होने वाले, जवान बच्चे होने वाले, ये फुर्सत है, ये गनीमत है जो तुम्हारे पास है, और इसको हाथ से जाने नहीं। टोटल 86,400 सेकंड्स आपको अल्लाह ताला दे रहा है ताकि इसे इस्तेमाल करें। आपके पास एक बैड न्यूज है और एक गुड न्यूज है। वक्त के सिलसिले में कह रहा हूं, कौन बचा कह सकता है इसको, बताओ मेरे। टाइम के सिलसिले में यू हैव वन बैड न्यूज एंड वन गुड न्यूज। कुछ भी नहीं, बैड न्यूज क्या है, गुड न्यूज क्या है? देखिए ऐसा आधा जवाब मैंने दिया। माशाल्लाह, माशाल्लाह। एक सलाम दे मोहम्मद वाले। दुनिया कहता है टाइम के सिलसिले में बैड न्यूज ये है कि टाइम गुजर जा रहा है, टाइम गुजर जा रहा है। गुड न्यूज ये है कि वो टाइम तुम्हारे हाथ में है। कार जा रही है आगे, लेकिन कार की ड्राइविंग किसके हाथ में है? जहां जाना चाहते हैं। टाइम के सिलसिले में यू हैव वन बैड न्यूज एंड वन गुड न्यूज। बैड न्यूज ये टाइम गुजर रहा है, गुड न्यूज ये टाइम तुम्हारे हाथ में। हाउ टू यूज, कहां इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे आगे बढ़ना है। इसी टाइम को इस्तेमाल करके लोग आसमान पे जा रहे हैं, इसी टाइम को यूज न करके लोग दुनिया में लड़ के अपनी जिंदगी को फितना फसाद और दुश्मनी में गुजार रहे हैं। टाइम कितना होगा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बार क्या होना चाहिए, इस्तेमाल बार होना चाहिए। इसकी अहमियत ने किस तरह इंसान की पर्सनैलिटी, शख्सियत से बोलते हैं। इंसान की पर्सनैलिटी किससे बनती है? टाइम से बनती है। अल्लामा हिल्ली बने वक्त को समझने से, मजलिसी बने वक्त को समझने से, है ना। शेख सदूक बने वक्त को समझने से। इसी तरह से शेख अंसारी बने, सादी बने, फिरदौसी बने। ये आज के साइंटिस्ट जितने हैं, ये सब के सब वक्त को समझने से। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो थियरी से
दरख्त से सेब अलग हुआ और वो सीधे क्या हो गया, आया नीचे। सबने देखा था, दूसरे हजारों लाखों करोड़ों इंसान के देखने में और न्यूटन से देखने में फर्क आया। वो देख के गुजर गए। इसने कहा भाई सेब ऊपर से नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया? अब मैं पेन को छोड़ूं तो ये पेन नीचे जाती है ऊपर जाती है? Why? Gravitational force। तब जाके उसने तहकीक की, जमीन के अंदर एक ऐसी कशिश है जो अपने तरफ खींचती है। उसके बाद उसने ऐसे लॉस बनाए जिसकी वजह से दुनिया में एक इनकलाब पैदा हो गया, साइंस में इनकलाब पैदा हो गया। उसके इन्वेंटेशंस ने बहुत बड़ी हिम्मत की। देखने वालों ने बहुत से देखा, करोड़ों लोगों ने देखा, लेकिन उसकी नजर जो क्या थी, मारिफत वाली नजर। टाइम को उसने समझा और उससे फायदा उठाया। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आज कितने दुनिया में साइंस ने तरक्की की। वक्त का इस्तेमाल। इसी तरह से बहुत बड़ा दानिशमंद कहता है, अगर तुम जिंदगी चाहते हो तो वक्त को समझो। जिंदगी चाहते हो, बोलिए, वक्त को समझो। आखिर के साथ रहो, पढ़े लिखे के साथ रहो, इंटेलिजेंट के साथ रहो, आलिम के साथ रहो। अगर क्लासमेट्स में दोस्त बनाना है तो टावर से दोस्त बनाओ, तुम भी टावर बनोगे। खेलने वाले के साथ दोस्ती करोगे तो खिलाएगा, पिक्चर देखने वाले से दोस्ती करोगे तो पिक्चर दिखाएगा, है ना? गुटखा खाने वाले से दोस्ती करोगे तो गुटखा खिलाएगा, है ना? दोस्त बात आसमान बात बरदार बात मार बात एक बार जना, दोस्त बात बार जना। फारसी का शायर कहता है कि सांप बुरा दोस्त सांप से भी बदतर है। सांप एक बार काटने मर जाते हैं, वो इलाही है राजू। लेकिन जो बुरा दोस्त होता है वो बार बार काटता है और अपनी जिंदगी को बर्बाद करता है। लिहाजा दोस्तों को चुनने में, सेलेक्ट करने में बहुत ही होशियार होना चाहिए। अगर आप अच्छा दोस्त है तो आप भी अच्छे हैं। इसे कहते हैं कबूतर बाग, कबूतर बाज बाबा। लंगड़े लंगड़े से दोस्ती करते, अच्छे अच्छे से दोस्त करते, नाटे नाटे से दोस्ती करते, लंबे अकल वाले अकल वालों से। अगर तुम कामयाब बनना चाहते हो तो अच्छे दोस्त की तलाश करो। जो अच्छे दोस्त रखता है वो इंसान दुनिया में कामयाबी हासिल करता है। तो ये और बहुत बड़े आलिम कहते हैं कि तुम्हारे पास दो कल हैं और ये आज दो कल हैं। कितने? दो कल। ये कौन से दो कल? ये बीता हुआ गुजरा हुआ कल जो हमारे हाथ में नहीं है, और ये आने वाला कल जिसकी गारंटी कौन जानता है कि आने वाला कल का सुबह जिंदा रहेगा या जिंदा? अल्लाह रखे आपको जिंदा 1000 बरस, जिसका हर एक रोज बराबर। दुआ तो करेंगे, लेकिन यू डोंट नो, हमारे हाथ में ये भी नहीं है कि ये अज़हरा की क्लास होने के बाद दारू ज़रा में नाश्ता। अभी मौलाना बाफरी साहब कह रहे थे कि उनके दामाद क्लास को जाने के लिए एक सांस पहने थे, दूसरे सांस को पहनना था। वो नहीं है, सांस पहनने का भी मौका अल्लाह रहमत करे। ये दुनिया है, एक सांस पहन लेते, दूसरा सांस पहन नहीं सके, अल्लाह के प्यारे हो गए। इंसान के पास जो गुजरा हुआ कल वो भी नहीं है, आने वाला कल भी तुम्हारे पास, आज तुम्हारे पास ये है ना। ये आज को कहते हैं एटीएम, आज को कहते हैं इसे क्या शिकवा। ये मत हो के बेटे नमाज पढ़ो, नहीं मौलाना दादा की उम्र हो गई तो नमाज पढ़ो। अच्छा, दादा की उम्र तक जिंदा रहते क्या? जमानत है, एक एक्सीडेंट
में खत्म हो जा सकता है, एक हार्डवेयर में खत्म हो जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। लिहाजा आज हमारे पास है, कितने चीजें करना है, सब करना है। वक्त से फायदा उठाया तो आप सब कुछ कर सकते हैं। नमाज पढ़ना है आज ही, रोजा भी रखना है आज ही अगर वाजिब है, हाँ, सलाम करना है आज ही, एहतराम करना है आज ही, स्कूल पढ़ना है आज ही, माँ बाप की इताअत करना है आज ही, दोस्तों के हक को अदा करना है आज ही, उस्ताद के हक को अदा करना है आज ही। कल के लिए कोई काम छोड़ना, आज का काम आज ही करना है, कल के लिए नहीं करना। लिहाजा आज को अगर समझ गए बहुत ज्यादा आगे है, लेकिन इसको वक्त की ये खुसूसियत ये है, आप कार में बैठे हैं, बहुत से बच्चे कार भी चलाते हैं, कार में सामने जाने के गेयर है और पीछे जाने के दो भी है, पीछे का गेयर है। तुम्हारे जिंदगी में सिर्फ सामने जाने के गेयर है, पीछे जाने का कोई गेयर नहीं है। इधर बाज़दश नहीं है, ला रुजूअ इसे कहते हैं बाज़दश नहीं। अम्मी के गोद में दूध पीते थे ना, कितना अच्छा लगता था। आज जा सकते क्या वो अम्मी के गोद में जा सकते हैं, दूध पी सकते, कितना शर्म है। बाज़दश नहीं है, ला रुजूअ लहू। आज कितना आसानी से मुअज्जिन कहता है, अच्छा आप बीमार हैं या बीमार नहीं है, बोलो हाथ दो, सेहतमंद है या सेहतमंद नहीं है? माशाअल्लाह सब सेहतमंद है। अच्छा रूहानी सेहतमंद है या नहीं? आप आराम से मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक्टिव हैं, बुखार नहीं है, नज़ला नहीं है, सर का दर्द नहीं है ना, आप कह रहे हैं मैं हेल्दी हूँ। आपकी रूह हेल्दी है या नहीं, कैसे मालूम है? आपकी रूह बीमार है या नहीं? मुअज्जिन अज़ान दिया, अल्लाहु अकबर, लोग स्कूल के चबूतरे में खेल रहे हैं तो क्या है, बीमार है। मस्जिद में आ रहे हो, वाह वाह वाह, है ना? ये तुम्हारे लिए आइडेंटिफिकेशन, ये मिशन है। आपकी रूह बीमार है या बीमार नहीं है? क्लासरूम में आ गए तो आप सेहतमंद हैं। जैसे भी पढ़ो देगा, सलाम के लिए हाथ उठा तो समझो आप क्या है, सेहतमंद हैं। सर झुका दिया बाप को देख के, आलिम को देख के, उस्ताद को देख के, या जो बड़ों को देख के, दोस्त को देख के, तो समझो क्या है, बीमार। किसी मोमिन को अपने भाई को देख के चेहरा मुस्कुराया, समझो आप क्या है, सेहतमंद हैं। चेहरा मोटा हो गया दुश्मनी की वजह से, समझो क्या है। तो मेरे बच्चों कोशिश करो, वक्त से फायदा उठाओ। ये वक्त है तुम्हारी जिंदगी को चेंज कर सकता है, तुम्हें इंसान बना सकता है, इंसान से ज्यादा अहमियत दे सकता है, अशरफुल मखलूक़ात बना सकता है। दुनिया में कितने ऐसे लोग जिन्होंने वक्त से फायदा उठाया। दिस टाइम इज योर टीनेज टाइम। मैं हमेशा दास्तान वाले हौजे के बच्चों को बताता हूँ, तुम्हारी जिंदगी को बदलता है। कहते हैं कि बचपन में इल्म हासिल करना, शेर, कुरान, हदीस, दास्तानें, एजुकेशन, मालूमात, साइंस, एवरीथिंग यू मस्ट गिव। आप बचपन में एक बार सुनते हैं, फौरन जो क्या होता है, आपको याद आ जाता है, पूरी चीजें याद हो जाती है, किसने क्या कहा। लेकिन बूढ़े हो जाने के बाद याद नहीं होता, याद हो गया तो जल्दी क्या हो जाता है, भूल जाता है। एक टीनेज है, इस एज में आपको सिर्फ आपकी जिम्मेदारी क्या है, कमाना नहीं है, काम करना नहीं है, सिर्फ जो वाजिब है काम करो। नॉलेज इंसान बनने के लिए, पैसे कमाने के लिए, सैलरी हासिल करने के लिए इंसान बनना है ना, तो नॉलेज है। हैवान में इंसान का फर्क क्या है? हैवान में नॉलेज गेन करने का पावर नहीं है, हमारे पास में नॉलेज गेन करने का पावर है। लिहाजा इसी वक्त में बचपन में याद करो। कहते हैं कि सत्ताकी से पहले अबू रहमान बेगुनी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े आलिम थे, और हजारों शागिर्दों को, स्टूडेंट्स को उन्होंने तैयार किया। बहुत सी किताबें
40 साल के बूढ़े को हम समझ में आया कि किसी भी तरह से दुनिया में अगर किसी की कीमत है तो किसकी है? ये यार मुझे इल्म हासिल करना है। अब दूसरे रोज निकलता है इल्म हासिल करने के लिए, हर स्कूल को जाता है, भाई मुझे एडमिशन ले लो, मुझे एडमिशन ले लो। 40 साल के बूढ़े को यूकेजी में लेना है कि एलकेजी में लेना? कैसे पढ़ना 40 साल के बूढ़े को? कौन से स्कूल में एडमिशन होता है? कहीं पर भी एडमिशन उसका नहीं हुआ। मिलाकर एक मेरे जैसा एक उस्ताद मिल गया और बहुत ही चाह उसने मुझे पढ़ा दीजिए, मैं कुछ पढ़ लूं। तो उस उस्ताद ने कहा कि देखो भाई ये जुमला तुम्हें सिखाता हूं, तो ये बुरा भी याद है बच्चों, नौजवानों, ये गिफ्ट है मेरी तरफ से, लेकर जाओ जरा। 40 साल के से उसने कहा ये एक सेंटेंस देता हूं, वो सेंटेंस याद करके आओ, अच्छा याद हो गया तो आपको एडमिशन लेगा, वरना आपका एडमिशन नहीं होगा। क्या जुमला है? खाला शेख जिल्दुल कल्ब युतहर, कहा कि उर्दू में तर्जुमा करता हूं दिक्कत के साथ, इंशाल्लाह इसमें हंसी भी है, दर्द भी है। सोच रहे गौर से सुन रहे ना? सुन रहे हैं नहीं? कहा कि उस्ताद ने कहा, जैसे छोटे छोटे बच्चे आप जाते हैं ना, कहते हैं कि जाओ पटाटा ले लो, पटाटो पटाटो पटाटो, दुकान पे जाके कहते हैं टमाटो, वो जा बच्चे और बूढ़े ऐसे। तो कहा कि ये जुमला याद रखना। कहा क्या? उस्ताद ने कहा कुत्ते का चमड़ा जब नदी नमक के नदी में पड़ता है और बदल जाता है तो क्या हो जाता है? पाक हो जाता है। याद कर क्या? रात भर बूढ़े याद करना शुरू करते हैं। उस्ताद ने कहा कुत्ते का चमड़ा नदी जो होता है वो नमक के नदी में बदलने के बाद वो पाक हो जाता है। रात भर 1000 बार याद करते। बुढ़ापे में इल्म की क्या हालत होती है, जवानी में क्या? सुबह को आया था, सर 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 मुझे अच्छी तरह से बताओ, कुत्ते ने कहा उस्ताद का चमड़ा। क्या कहते हैं उसने? उल्टा कर दिया। तो उस्ताद ने कहा जाओ, अब तुम्हें इल्म हासिल होने वाला नहीं है। जिस वक्त में इल्म हासिल करना था, इल्म हासिल नहीं। अब ये बहुत ही शर्मिंदगी के साथ वहां से निकलते हैं और पहाड़ों के पास जाता है और देखता है कि ऊपर से एक एक कतरा पानी जो है पत्थर के ऊपर पड़ रहा है और पड़ते 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 उस पानी के कतरे ने पत्थर के जिगर को फाड़ दिया। तब उसके जहन में बात आई, भाई जब ये कतरा पत्थर को फाड़ सकता है तो मेरा दिल और मेरा दिमाग पत्थर से सख्त है। लिहाजा पढ़ना शुरू किया, यहाँ तक के वो एक बेहतरीन आलिम बन गया और जो है उसने कई किताबें लिखी और आज के हौजे के सब्जेक्ट्स में उसके अदबियात जो है पढ़ाए जाते हैं। लिहाजा इंसान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए। अगर आपने वक्त से फायदा उठाया तो आपकी जिंदगी कामयाब, वक्त से फायदा नहीं उठाया तो आप दुनिया में भी हसरत करेंगे, आखिरत में भी हसरत करेंगे। ये कब्रिस्तान में सोने वाले मोमिन क्या कह रहे हैं? खुदा से मालूम क्या कह रहे हैं? अपने दोस्त से बोले क्या कह रहे हैं? अल्लाह से कह रहे हैं परवरदिगार ये बात हमको अलीपुर दोबारा भेज दे, नमाजी पक्के, रोजेदार पक्के, जबरदस्त इंसान बन जाते। अल्लाह कहता है जब भेजा था पता नहीं, अब भेजाना चाहते हम, भेजने वाले according to Islam there is a no नया जन्म, you have only one। हिंदुइज्म में क्या है? और एक जन्म में, और एक जन्म में, ये जन्म में अच्छे थे तो अब एक जन्म में अच्छे है ना। अकॉर्डिंग टू इस्लाम कोई नया जन्म नहीं है, यही एक जन्म है जिस एक जन्म में अपने जन्नत को बनाना है। जिसने इस जन्म को बर्बाद कर दिया फिर उसे कोई जन्म देने वाला नहीं। परवरदिगार हम सबको टाइम समझने, उसकी शिनाख्त हासिल करने, उससे फायदा उठाने और एक अच्छे इंसान बनने की तौफीक इनायत फरमाए। शुक्रिया। अभी जेंट्स के लिए 3 सवाल होंगे, 3 सवाल लेडीज के लिए।
रख रहे ताकि रिपीटेशन ना हो। टाइम के सिलसिले में मैंने कहा कि टाइम के सिलसिले में एक बैड न्यूज है, एक गुड न्यूज है। किसी ये बैड न्यूज है, टाइम गुजर गया। ये गुड न्यूज है, हमारे पास टाइम है। दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है, हमारे पास 2 कल और 1 आज। 2 कल कौन से? एक जो पहले दिन गया था वो कल, एक जो आने वाला वो कल, जो आज हुए। तीसरा सवाल, पीछे वाले जवाब। मुसाफिर हो गया। तीसरा सवाल जो है वो ज़ायरीन और हमारे मेहमानों के लिए वो ये कि हजरत पैगंबर इस्लाम ने जो वल अस्र के सिलसिले में फरमाया, अस्र वल अस्र यानी क्या? ज़माने की कसम। इन्नल इंसान लफी खुस्र। खुस्र का माना मैंने क्या किया? खुस्र, खुसरान। खुसरान के माने नुकसान। कैसा नुकसान? मिसाल के जरिए से एक बर्फ है जो पिघल रही है, वो जो पिघल रही है वो नुकसान है। जैसे आपने वक्त के लिए बोला है कि मेरे गाँव में आज मेरे पास 86 सेकंड्स है और हर सेकंड जैसा गुजर रहा है तो नुकसान है अगर उसका फायदा ना हो। हसन तो सैयद मोहम्मद हुसैन, मैं सैयद आबद हुसैन। हसन। मेरे बहनों के लिए सबसे पहला सवाल, खुदावंद आदम का सबसे बड़ा गिफ्ट, गॉड गिफ्ट जो इंसान को अता किया गया है वो क्या है? लेडीज का सवाल है। जी जी। हाँ। आपने को आधा नाम के डिटेल्स बताएं। जी बताइए। सवाल हाँ जी, क्वेश्चन करना, इसके आंसर खुदा आंसर कीजिए। अल्लाह का गॉड गिफ्ट क्या है इंसान के लिए? सबसे बड़ा गिफ्ट टाइम। टाइम। ऐसा ये दूसरा सवाल है, सक्का की कौम थे और इस दास्तान से हमें क्या दर्स मिलता है? सवाल तो है, सक्का की कौम थे और उस दास्तान से हमें क्या दर्स मिलता है? सक्का की एक दास्तान मैंने बताई, किस्सा। बता रहे हैं नहीं? बचपन में जी, बचपन में क्या करना है? इल्म हासिल करना है। सन अबू रेहान बेरूनी ने तीसरा और आखिरी सवाल बहनों के लिए वो ये कि हाँ, मुसाफिरीन जवाब देंगे। अबू रेहान बेरूनी एक जो आलिम दीन ने शागिर्द से डिस्कस किया आखिरी लम्हात में, तो उन्होंने एक जुमला कहा। वो जुमला क्या था? अबू रेहान बेरूनी की दास्तान में जब उन्होंने शागिर्द से आखिरी लम्हात में डिस्कस किया तो आखिर में जवाब दिया उन्होंने। तो जवाब क्या था? जब उनके घर वालों ने कहा कि ये मरने के जमाने में ये डिस्कशन करने की क्या जरूरत है, तो उन्होंने एक बेहतरीन जवाब दिया। वो क्या था?
मरना बेहतर है या बगैर जाने मरना बेहतर है? ऐसा तुम आप करना सर कहाँ से हैं? अच्छा ठीक शुक्रिया। हम शुक्रिया अदा करते हैं मौलाना अज़हर साहब के अदा करा कि आपने वक्त की अहमियत की तफसीर से बयान किया। शुक्रिया एंड नाउ बस 3 सवाल है। एक सवाल हाँ मुसाफिर के लिए एक सवाल है। लाइफ इज इक्वल टू बहुत आसान सवाल है मुसाफिर के लिए जवाब दीजिए। लाइफ इज इक्वल टू लेडीज आखिरी सवाल है मुसाफिर के लिए बहुत आसान सवाल इसलिए कि टाइम नहीं है। लाइफ इज इक्वल टू जवाब नहीं आ रहा वहां से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कोई भी दे सकते हैं मुसाफिर में से जवाब, कोई भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन जो सीनियर हैं वो भी अपने वक्त से फायदा उठा सकते हैं इसलिए कि उनका ज्यादा वक्त गुजर गया है तो ठोकर खाएंगे। जिनका पैसा गुम हो जाता है वो जो पैसे बाकी हैं उसकी बहुत हिफाजत करते हैं। लिहाजा जिनका वक्त गुजर गया है 18 साल 20 साल 25 साल या 50 साल 60 साल उनको और ज्यादा वक्त से फायदा उठाना चाहिए इसलिए कि बहुत ज्यादा उनका गुम हो गया बर्बाद हो गया। और वक्त का फायदा न उठाया तो जिंदगी में भी हसरत रहता है कि और आखिरत
Let's see if we can. So we have someone who researched viscosity. Inshallah, we'll look at the answer. Please, Because fluids resistance to flow. Example is water and honey. Water has low viscosity. That viscosity has 1.0 centipoise, and honey has higher viscosity, 12,200.0 centipoise. that's excellent. Excellent. That's a great answer. So the answer that you gave, mashallah, you can honor. Very good answer. Good job. So the answer and the example that you gave was that viscosity is the internal resistance of a fluid to flow. So, for example, if you pour water out of a glass or out of a bottle, if I pour water out, it will flow very quickly. If I flow, this means that water has low viscosity. It's the internal resistance of the fluid to flow. If you take honey, if you put honey shahid in this bottle and you pour it out, it will not pour out as fast as water. That means honey has more resistance to flowing inside of its fluid structure. So in another way, you can think about the same thing for air. Air has low viscosity compared to water. If you try to fly a plane in air, you will have less drag than if you try to fly a plane in water. Okay, because water has more viscosity. Okay? So this is a little bit about the drag force related to viscosity. There's one other force that's very important to us, which is the lift. Lift force dictates how we can lift the aircraft up into the air. Okay, so I'm going to talk to you just for a couple of minutes about where the lift force comes from. And so the lift force comes from a change in pressure. So if you look at an aircraft, like this one, this aircraft over here, let's see if I can call on the pointer. There we go. Okay, so when we're talking about an aircraft like this one, this is the front of the aircraft. Yesterday we had a very good question about why can planes not fly backwards. The reason really has to do with the lift vector, the direction of the lift force. In a conventional airplane, the lift force is straight up. It's perpendicular to the wing. So you can see the wing mounted on the top of this aircraft, and so the lift vector is straight up.
for 2 minutes, that's when we get up to about 40 kilometers of altitude. We get up to 40 kilometers of altitude in the first 2 minutes of flight. The solid rocket boosters are interesting because they're kind of a dangerous candle to light. The reason we call them a dangerous candle to light is because they make solid propellant. The solid propellant is like, if you think about like a piece of solid fuel source. Do you guys have any solid fuel source that you use here on the ground? Coal? Okay, coal, what else? Right now we're going to have the Nawa for all of the Mazaka, right? In a couple of days, they're going to start making lots of food right outside the masjid, right? What's the fuel source that they use? They use wood. Wood is a solid propellant. Wood is a solid fuel source. Now, when you light the wood on one side, what's going to happen eventually over time if you don't do anything to it? It will burn the entire piece of wood. It will burn the whole log, right? This is what's happening inside of a solid rocket booster. In a solid rocket booster, there is no control. The propellant is solid, and because it's solid, there's no way to stop the combustion process. Once you light the propellant on the bottom, it's going to burn the entire vertical distance all the way through to the top until all of the propellant is consumed. There is no off switch for the solid rocket boosters. You cannot control it. So once you turn it on, you have to be very, very sure that you want to launch. Because once you turn it on, you cannot stop the combustion process. It will burn through the entire stack of solid propellant and bring you to about 41 kilometers of altitude. When you're at 41 kilometers of altitude, there's no more fuel left. That's when the solid rocket boosters fall off. And the vehicle lets the solid rocket boosters drop away. Alright, the next thing that happens, after you get to 41 kilometers, you're not out of the Earth, you're not into Earth orbit yet. Does anybody know when you get to outer space? What altitude gets us to outer space? Is it 41 kilometers? It's 41 kilometers in space. Are we in space when we get to 41 kilometers? When the solid rocket boosters run out and they fall off? Are we in space? No, we're not in space yet. What altitude do we say now we're in space? What's the altitude? What's the height? 400? 400 kilometers. Okay. Any other ideas? 600 kilometers. That's much lower. I want somebody to look up. Here's my second homework question for today. I want somebody to look up what is the carbon line. Not somebody with the phone right now. I want you to go home and do it. What is the carbon line? And where do we say space, outer space actually begin? What altitude is the carbon line? Okay, look that up. Alright, so at 41 kilometers, we're not in outer space yet. So we still need more thrust to continue our descent. Okay, so to continue our descent, we drop the solid rocket boosters at 41 kilometers. They fall away into the Indian Ocean. And then the liquid propellant stage begins. The liquid propellant stage uses a combination of liquid propellant in the form of water and hydrogen. Hydrogen is a very interesting rocket propellant. Hydrogen is very useful because hydrogen does not require a combustion source. For example, when we're talking about solid fuel sources like wood or coal, when we're using the solid fuel sources, you have to ignite them. Wood on the outside
it has the most energy in its molecule. That's why hydrogen is a very good fuel source. Now, but the problem with hydrogen is that it's a gas. Because it's a gas, it takes up a lot of volume. It takes up a lot of space. What can we do to gases to reduce their volume? Compress. Now, what phase of a gas would use less
prepared. You have to be ready for the moment when it comes. You cannot have perfection in the moment of the exam, the moment of the imtihan, if you do not prepare very well coming into the exam. So please make sure you remember this lesson. Okay? All right, next. Next thing I want to show you guys a little bit about here was the launch process. After the launch process, now we're in orbit. So what happens after we're in orbit? After we're in orbit, the next thing that's going to happen is we're going to go from the Earth orbit, and we're going to have what we call translunar injection. Translunar injection is where we take our path towards the moon. And the moon is very far away. It's over 300,000 kilometers away. All right, so we use a few maneuvers to build up velocity. Once we build up velocity, we escape Earth orbit, and we have translunar injection. And then we go to the moon. And it's going to take about a month for us to get to the moon. Okay? Took about Chandrayaan-3 launched in July. It arrived at the moon in August. The soft landing happened in the middle of August. It took about a month to get to the moon. Now, when it got to the moon, the next thing that happened over here is there was a module. The spacecraft itself was made up of the propulsion module here, the lander, which was designed to make a soft landing on the moon surface. The propulsion module is actually still in orbit around the moon right now. It has about 7 years of fuel. So the propulsion module is still orbiting the moon right now as we speak. And then the lander is on top. The lander is designed to make a soft landing on the moon as opposed to a hard landing. Hard landing is dangerous. We don't want to do that. It can mess up our time in the instrument. So we designed it to do a soft landing. Chandrayaan-2 was not able to make a soft landing on the surface of the Earth, on the surface of the moon. That's how we had Chandrayaan-3. Chandrayaan-2 was able to successfully make a soft landing on the surface of the moon. And when it made that soft landing, you can see the soft landing coming down over here. When it actually landed on the surface of the moon, what it then did is it deployed a rover, an electric rover. The electric rover has enough battery power to survive a mission of 1 lunar day. Now, it's interesting because 1 lunar day is not the same as 1 day on Earth. 1 lunar day, how many days are in a lunar day? 2 weeks, 14 days. 14 Earth days are in 1 lunar day. We're talking about 1 lunar day, we're talking about the transition that it takes to become nighttime on the moon. To become nighttime on the moon takes 14 days, and then it takes another 14 days to become day again. Okay, so this is 1 lunar day. Right now, when we have a lunar day cycle on the moon, we designed the lunar rover to survive 1 lunar daytime with a solar panel to charge the batteries and allow for motion
Three. No, how many stages are there in launch? Not three stages to the launch. The solid rocket boosters is the first stage. Okay, so the last question I'm going to ask you guys is, can somebody name all three stages? What are the three stages? So there's three stages in the LMV
We're going to have to go backwards a little bit here. Hold on. The third